is considered pretty unsafe. You should always know कि क्या codes हैं उस country में. For example, what is the code to call for emergencies, for ambulances, for police, etc. You should just know these things. That's a very good point. कुछ भी सीखने के लिए अपना मजाक बनाना सीखना चाहिए. Practice doesn't make perfect, it makes better. आप Google Flights पे जाओ. Put anywhere. Put your country where you're leaving from. Put your airport where you're leaving from. Put your budget. कि तुम्हें 10,000 में return flight चाहिए, कहाँ की मिलेगी. तो मतलब I think that is a very interesting. I think that is one of my favorite hacks. Bonjour. Well, I know I'm not good at speaking French, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगी जिन्होंने अपनी लैंग्वेज स्किल्स को यूज करके ही कानपुर से फ्रांस तक का सफर तय किया. और इतना ही नहीं, उन्होंने 18 कंट्रीज भी एक्सप्लोर करी हैं. हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम. मैं हूँ आपकी होस्ट रितिका एंड वेलकम टू द कानपुर स्टोरीज पॉडकास्ट. एंड टुडे इन आवर एपिसोड वी हैव मिस प्रगीत गोयल, जिन्होंने 20 साल की उम्र से ही ये सोच लिया था कि यार एक ही जिंदगी है और एक जगह तो बिल्कुल नहीं बितानी है. सो देर किस बात की है, आओ बात करते हैं उनसे एंड जानते हैं कि आखिर इस सुकून भरी ट्रैवल लाइफ के पीछे कितना हसल इन्वॉल्व है. हाय प्रगीत, वेलकम टू द कानपुर स्टोरीज. Thank you. Thanks for having me. सो अच्छा, अभी आप जैसे कानपुर में अभी इस वक्त आए हुए हो, आप वैसे जनरली कानपुर कितना आते हो एंड कितना टाइम बाद आए हो अभी? यार डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज अभी तो जैसे इस बार मैं सिर्फ 1 मंथ के लिए आई हूँ, बट नॉर्मली 2 महीना 3 महीना तो हो ही जाता है. सो यू लाइक कानपुर? यार कंफर्ट तो कानपुर का इज़ डिफरेंट ओनली ना, मतलब बट गर्मी बहुत है, बट अदरवाइज कानपुर ऐसे इतना टाइम बिताया है यहाँ पे तो अच्छा लगता है आके वापस फ्रेंड से मिलो, फैमिली से मिलो, घर का खाना. घर का खाना इज अ वेरी बिग डील. बट अगर जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं या फिर अपनी होम टाउन भी वापस आते, वी ऑलवेज हैव अ फ्यू थिंग्स इन माइंड कि ये करना है, ये खाना है, यहाँ जाना है. व्हाट आर दोज थिंग्स फॉर यू? What are those things for me? One is definitely I like to go on drives with some of my friends. वो तो definitely ऐसे गंगा बिराज वाला ड्राइव तो करना ही होता है हमेशा. एंड जैसे अभी ना जब मैं रिसेंटली कानपुर लास्ट टाइम जब मैं कानपुर आई थी, मेरे बहुत इच्छा थी ब्लू वर्ल्ड जाने की. और बहुत टाइम हो गया. मैं लास्ट ब्लू वर्ल्ड गई हूँ जब मैं स्कूल में थी, which is like 6 years almost. I went for a holiday kind of a thing for Blue World. So basically we went on Children's Day because यहाँ पे लेके जाते हैं ना Children's Day पे outing के लिए, तो हम Children's Day पे गए थे Blue World. But I really want to go do that. And then मेरे पास ना ऐसे लिस्ट होती है एक प्रॉपर कि मम्मा ये खाना है, पनीर नान होगा, जज डोसा बनेगा. So it's always like those little things and So you miss कानपुर का food in France? बहुत ज़्यादा. One of the biggest things that I miss is like food. And apart from food? Apart from food, यार obviously friends ना, it's not the same. जिन friends के साथ आप ऐसे 5 साल तक रहे हो, you've spent time with them, you have a connection with them. I have friends in France, but it's not the same connection ना, मतलब तो it's that definitely that bond, friendship वाला bond कि ऐसे गेड़ी मारने चले गए. But these are the things I miss a lot. Like food तो definitely number one. Because वो सेम खाना even when I cook in France, it's not the same. मतलब नहीं मिलता वो सेम फील. Exactly, like even if you get those specific मसालास, भाई वो नहीं बन सकता है. Exactly, क्योंकि मैं घर कानपुर से लेके जाती हूँ हर बार मसाले. अच्छा. मेरा पूरा पैकेट जाता है ऐसे मसालदान का, every time. But वो सेम फील नहीं आ पाता. It's not the same food as मम्मा दादी के हाथ का खाना. Yeah. Okay, so अच्छा, since we are talking about France right now, तो how do you started off with your journey exactly? मतलब कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई? यार it's I think it was a long time in making, क्योंकि मैंने ना क्लास 5 में फ्रेंच पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि थर्ड लैंग्वेज होता था स्कूल में. You're from which school? I'm from DPS Kalyanpur. Okay. So as a third language I took French, and then मैंने हमारा ऑप्शन होता था 9th में चूज करने का हिंदी या फिर आपकी जो थर्ड लैंग्वेज है. तो मैंने फ्रेंच चूज करी बिकॉज आई एम लाइक हिंदी तो आती है ना, मतलब जितना इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, you know that हिंदी, you're fluent in Hindi, that's your mother tongue. So then I took that, and तब से मेरा ऐसे इंटरेस्ट था काफी इन जनरल, क्योंकि ऐसा लगता था ना कि कोई एक नई लैंग्वेज सीख रहे हो तो मतलब इसका मतलब होता है कि आप और बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो. And it's not the same, when you're visiting a new country and आप language जानते हो तो आप actually उस culture में immerse कर सकते हो खुद को. तो that's why I studied French in my bachelor's also. अच्छा. And then जब बैचलर्स में पढ़ा तो यार इतने साल पढ़ा है तो रह ही लेते हैं जाके फ्रांस में. So that's why I went for this program called assistant d'anglais, which is like you go to France and teach English and your culture to have French high schools and different schools. अच्छा, okay. So it's a French cultural ministry, like education ministry program, and it's very interesting. So you do that for 7 months and you're paid and you get a lot of vacation days. So it's really nice as a program. So I went for that. But like now you are doing that. But when you started off, it must have been a very difficult journey. And वो पहला step आपने क्या लिया था? Difficult journey as in? Like the point is that अभी you have reached a certain level, certain stage. But जो पहला step था, first step of exploration, what was that for you? First step of exploration. The thing is कि मेरे ना, I think it's in the genes only.
the whole exploration wanderlust bug, because मेरे grandfather, he loves to explore. मतलब वो बिल्कुल कहीं भी जाके वो किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं. मतलब अभी जैसे वो ऑस्ट्रेलिया गए तो he made friends, then he went by himself to different cities in Australia. तो उनका बहुत ही exploration. And my dad also, he loves to travel. तो ऐसा I think वो तो genetic काफ़ी है in general. And I remember मैंने first school trip करा था हमने गोवा में, and that was fun, but that was like with school. And then मैंने अपने पैसे से पहला trip JLF के लिए करा था when we went to Jaipur with friends when I was in college. So तब से I think थोड़ा वो you know that travel bug bitting वाला scene था, and it's like तब से I have like दुनिया इतनी चीजें हैं देखने के लिए, you should like just go ahead. And then when I went to France, मतलब France was the second time I actually went to Europe. Okay. First time, I saw this ad on Instagram, which was for this thing called the International AIDS Conference in Amsterdam. And मैंने मजाक में उस ad में ऐसे apply कर दिया for becoming a volunteer in Amsterdam. And उसके बाद 3 rounds of interviews and ये सब हुआ, and I got selected. So they paid for my travel, they paid for my accommodation, food, everything. तो parents भी नहीं बोल सकते थे कि पैसे लगेंगे, you know. Then I had to go to Amsterdam, and I went to Amsterdam by myself for like 10 days. So तब से मतलब I was like ये तो करना है जिंदगी में, you know, दुनिया देखनी है. And then once you have that motivation, once it's done, उसके बाद you can't stop. वो जब से आपको ऐसे ट्रैवल का कीड़ा काट लेता है ना, तो चाहे तुम्हें हॉस्टल में रुकना पड़े और सैंडविचेस ही खाना पड़े ना, बिकॉज तुम्हारे पास बहुत पैसे नहीं है, इट्स स्टिल वर्थ इट. जब तुम नई सिटी देखते हो जाके कोई, और तुम लोगों से बात करते हो और उनकी स्टोरी सुनते हो ना, तो मतलब दिल खुश हो जाता है. That's very true and that's like great to know. But like जब आपने बैचलर्स ऑफ फ्रेंच किया था, उसके बाद what was the first internship या job, वो क्या थी आपकी? मेरी first internship during my bachelor's was at LBB, which is Little Black Book. And what they do is, now it's a little different, but before they used to be a recommendation platform. So basically what I had to do was I had to talk to people to get them on board to recommend on the platform. तो लोग हमारे साथ आते थे, they used to tell us कि कहाँ पे best खाने की जगह है, कहाँ पे you have to like go to shop and things like that. And that's how I started exploring Delhi. So that's why I really know like Delhi ढंग से. And फिर then I joined Spoon University. I became the head of Spoon University. तो हमने बहुत restaurants explore करे. तब से ऐसे photography, writing ये सब चला. And then ऐसे धीरे धीरे करके I worked with So Delhi, Tripoto and all these different platforms. तो सारा ऐसे जिंदगी में ऐसे थोड़ा related ही रह गया कि writing, photography and travel has always been a part of my, you know, since my bachelor's. So that's how it started. And now I want to like continue in this career in general. So you like Delhi better or Kanpur? यार तुम कानपुर स्टोरीज पे मुझे ये बुलवा रहे हो. No, it's just a general question. Yeah, the thing is Kanpur has a different significance because मैंने अपनी जिंदगी के बहुत साल बिताए हैं कानपुर में. And Kanpur, say I started like I came to Kanpur when I was in 5th grade. I was born in Kanpur, but I did not live in Kanpur till like I was in 5th grade. Acha, okay. I used to live in a very small town called Pukraya. And फिर कानपुर से I got my confidence, you know. School जाके, when you make your own image, that is what Kanpur is for me. And then Delhi's freedom. दिल्ली में खुद सब कुछ करना, खुद अपना मैनेज करना, इंडिपेंडेंसी दिल्ली में आती है. Exactly. तो दोनों ही अपने अपने रोल प्ले करते हैं, बट इन जनरल मतलब मुझे दिल्ली ज्यादा पसंद है. सो व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ विद योर करियर, लाइक कभी फैमिली से वो प्रेशर नहीं आया कि एक कन्वेंशनल जॉब कर लो या इतने में 9 to 5 में रहो? नहीं, कभी नहीं. Wow, that's my parents and my family in that regard are incredible. मुझे आज तक मेरे पेरेंट्स ने नहीं बोला कि तुम्हें इंजीनियर ही, डॉक्टर ही बनना है. तुम्हें जो करना है करो, तुम खुश रहो, तुम अपना मैनेज करो. तो मेरे पेरेंट्स इन दैट रिगार्ड माय पेरेंट्स आर इनक्रेडिबल. मतलब मुझे फ्रांस जाना था, तो मतलब नॉर्मली पेरेंट्स बोलते हैं ना कि नहीं ऐसा कैसे, यहीं रहो. कभी नहीं बोला. इफ आई वांटेड टू गो टू फ्रांस, आई वाज लाइक ओके, ठीक है, तुम कर रही हो, यू गो वेयर यू वांट टू गो. हम तुम्हें नहीं बोलेंगे. फिर बाद में बेसिकली आई रियलाइज मतलब ऐसे कन्वेंशनल करियर्स में क्या होता है कि तुम बच्चों को भेज तो दिया, बट देन फिर बच्चे आपकी तरफ आपसे यू नो दे नॉट हैप्पी विद इट. तो मतलब पॉइंट क्या है जिंदगी में? खुशी रहना तो पॉइंट है. मतलब क्या ही कर लोगे तुम कन्वेंशनल करियर्स में जाके. बट आपको कभी ऐसे मन में आए कि यार बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं अनकन्वेंशनल फील्ड में जाते हुए? नॉट रियली. मुझे मेरा क्या सीन है कि मुझे लगता है कि अगर आप अपना पेट पाल रहे हो, इफ यू कैन ईट, इफ यू नो वेयर टू स्लीप, यू आर फाइन. ठीक है, वो तो हो जाएगा मैनेज.
But you have to be like more careful, of course. You have to be like, नहीं, you have more, like ऐसे fire होता है ना जो, जब आप unconventional career में जाते हो तो वो ज़्यादा होता है क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको exactly क्या direction है. True. तो वो तो बनते हैं. और मेरा philosophy is like 1 year at a time. अगले साल पता होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो, 5 साल down the line देखा जाएगा. That's a pretty good philosophy जो मुझे ज़रूर adapt करनी पड़ेगी. अच्छा, so like how was your first day in France? Like क्या experience लगा, कैसा लगा? So the thing is, I had been to France before this program. अच्छा, जब मैं एम्स्टरडम गई थी तो हमारे पास ऐसे 1.5 दिन एक्स्ट्रा था. तो हम यूरोप का बेस्ट पार्ट है कि आप एक दिन में एक दिन ब्रेकफास्ट आप सुबह एम्स्टरडम में करके लंच आप पेरिस में कर सकते हो. सो दैट इज व्हाट वी डिड. वी वेंट टू पेरिस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मुझे ना पेरिस पसंद नहीं आया था तब बहुत ज्यादा. माय फर्स्ट टाइम इन पेरिस, आई डिड नॉट एंजॉय इट. बिकॉज एक तो हमारे पास 1.5 दिन था तो थोड़ा सा भागम भागी वाला हो गया. एंड देन हमारा ऐसे कुछ ट्रेन का इशू हो गया था. तो मतलब मुझे फर्स्ट टाइम पेरिस इतना पसंद नहीं आया था. मतलब इट वॉज ब्यूटिफुल ऑफ कोर्स बट इतना फील नहीं आया था. बट अदरवाइज मेरा फर्स्ट डे था फ्रांस में. I didn't go to, मतलब I went to Paris first, but then I had to go directly to another place because France is not just Paris. So for our audience. So basically when I went, there are some colleagues of mine who came to pick me up and it was a very small town. पूरे town में 8,000 लोग थे सिर्फ. यहाँ पे तो मैं बोलती हूँ कि 5,000 तो मेरी कॉलोनी में ही है. एक मोहल्ले में उठा देंगे 10,000 अपन. So मेरे को बहुत अजीब लगता था फर्स्ट इन द बिगिनिंग, इट वाज स्ट्रेंज कि मतलब ऐसे 8,000 ही लोग हैं और कोई नहीं दिखता था अपनी एज का. तो थोड़ा अजीब था. बट ऐसे तो मतलब मुझे आई थिंक इन जनरल आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जिसको ऐसे बहुत कल्चर शॉक लगता है क्योंकि हम लाइक दूसरी कंट्री में आए हो तो इट विल बी डिफरेंट. सो दैट्स द प्लस पॉइंट कि आपको वो कल्चरल शॉक नहीं लगा कि मतलब ओ दिस इज वियर्ड या ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा. बिकॉज आई हैव नोटिस्ड पीपल कि दे वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स, दे वांट टू गो टू अनदर कंट्री बट उनके मन में अभी भी वही रहता है कि मुझे अपना कंफर्ट जोन चाहिए. एंड लाइक हाउ डू यू सी दैट? यार देखो, I told you I have a big problem with the whole idea कि आप कहीं जा रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करो उन लोगों को अडेप्ट करना है आपके अकॉर्डिंग, विच इज नॉट ट्रू. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आ रहा है हमारी कंट्रीज, इफ समबडी इज कमिंग टू विजिट इंडिया, दे वोंट एक्सपेक्ट अस टू स्पीक फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच और जर्मन. They would expect like the simplest ways, like if you want, I have heard कि मतलब मैं जब फ्रांस नहीं गई थी तो मुझे सामने बोला बहुत रूड हैं फ्रांस के लोग. आज तक मुझे कोई रूड इंसान नहीं मिला है सच. मे बी 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं बट दैट डज नॉट मीन कि हर इंसान फ्रांस का रूड है. सेम फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बाहर से आ रहा है इंडिया तो देयर विल बी पीपल जो बिजी होंगे जो हेल्प नहीं करना चाहते हैं इंडिया में भी, और देयर विल बी पीपल हु विल बी लाइक हाँ हम आपकी हेल्प करते हैं. सो इट्स द सेम फॉर एनी कंट्री. आप किसी भी कंट्री को ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते हो. तो इफ यू आर ट्रैवलिंग, द आइडिया फॉर मी टू ट्रैवल इज टू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, टू गेट आउट ऑफ योर ओन बबल, टू सी कि दुनिया में और क्या है, to see, to learn from different cultures or to learn from a different country or to sort of मतलब imagine, मतलब मैं बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल जब मैं फर्स्ट टाइम फ्रांस गई थी तो मुझे फ्रेंच ढंग इतनी अच्छे से नहीं आती थी. तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम पे मुझे बहुत बेसिक फ्रेंच आती थी. सो व्हेन यू सी द डिफरेंस कि अगर आप उनसे बोल रहे हो कि टेल मी, हेल्प मी विद दिस थिंग, इंस्टेड ऑफ सेइंग ओके बोंजोर, कैन यू हेल्प मी विद दिस थिंग, देयर इज अ डिफरेंस. तुमसे भी अगर कोई इंडिया में भी आके बोलेगा हेलो कैन यू हेल्प मी, इंस्टेड ऑफ सेइंग प्लीज मेरे मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइक पोलाइट वर्ड्स लाइक प्लीज, थैंक यू, हेलो, आई थिंक दीज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल रिएक्ट टू यू इन अ डिफरेंट कंट्री. प्लस ट्रैवलिंग का मतलब ही यार कंफर्ट के बाहर जाना है. इट्स टू सी मोर थिंग्स. इट्स नॉट टू, इट्स आई थिंक फॉर मी ट्रैवलिंग इज नॉट अबाउट कि तुम बाहर जाके दूसरे अपने ही जैसे लोगों से मिलो. इट्स अबाउट गोइंग एंड सीइंग पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम यू एंड लर्निंग फ्रॉम इट, और sort of putting yourself in a place where you're like, okay, what I do and how I do it is not the only way to do it. So I do have a big problem with expecting other people, other cultures to adapt to your needs as a tourist than trying to sort of immerse yourself in their culture and trying their things. That's very true, and actually I completely agree to that because लोगों का mindset वही है, like they'll just see a few set of people, like they'll see just 10 people out of 100 and they're like हाँ पूरी country ही ऐसी है. Because even I remember when I went to Qatar and there were like few rumors coming from there since the FIFA was being hosted over there.
तो दो चार चीजें लोगों ने देखी एंड दे वर लाइक पीपल की वो तो कंट्री ऐसी है, मिडल ईस्ट इज लाइक दैट, मिडल ईस्ट इज दिस, एंड लाइक यू जस्ट कम हियर वंस, यू जस्ट ट्रैवल द होल कंट्री वंस एंड देन यू रियलाइज कि मतलब क्या है एक्चुअली में, पीपल लव ईच अदर। एंड ऐसा नहीं कि वहाँ के लोकलाइट्स को पसंद नहीं है टूरिस्ट्स, दे लाइक इंटरैक्टिंग विद यू, बट दैट इज कि ताली दोनों हाथ से नहीं बचती, इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस, यू नीड टू कोऑपरेट विद देम एज वेल। सो अच्छा, I just heard that Europe is considered pretty unsafe. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? I have not had anything stolen 3 साल में, कभी भी कुछ भी मेरा नहीं चुराया गया है, कुछ भी नहीं हुआ है मेरे साथ बुरा. I have not had, मतलब maybe it's because I know the language or I know the place, but of course there's incidents जहाँ पे लोगों का मतलब in countries, not in countries like, but like in cities which are extremely touristic, जैसे पेरिस है या बार्सिलोना है, तो of course there's some areas जहाँ पे आपके pickpocketers बहुत ज़्यादा हैं या फिर जहाँ पे थोड़ा crime ज़्यादा है, but आप पूरी country को ऐसे नहीं बोल सकते कि पूरा continent ही it's unsafe. Overall, I don't think Europe is an unsafe continent. मतलब अब डिपेंड करता है आपके ऊपर भी, आप कहीं भी जाओ तो आप ट्रैवल कर रहे हो, सबसे पहला है कि आपको खुद कॉशियस होना पड़ेगा इन जनरल. सो इट्स ऑल्सो अबाउट योर इंडिविजुअलिस्टिक, लाइक एज एन इंडिविजुअल आपको खुद सेल्फ, लाइक आई फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट टेक माई फोन, आई एम ईटिंग इन अ वेरी टूरिस्टिक लोकेशन एंड आई कीप इट ऑन द टेबल without having to care about it, you know, in general. तो मतलब वो फोन चोरी होने का आप खुद for that, exactly. हाँ, आप खुद दे रहे हो ना अपॉर्चुनिटी लोगों को उसको चुराने की, वो कहीं भी हो, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो यूरोप में हो, कहीं भी हो, it's not the, you know, that's going to be a problem. कि आपको भी सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, आपको भी कॉशियस होना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या अपना फोन प्रॉपर्ली रख रहे हो, कहीं भी हो सकता है ना, मतलब ये चीजें तो आई डोंट थिंक ओवरऑल यूरोप इज एन अनसेफ कॉन्टिनेंट. आई बीन लिविंग बाय माई सेल्फ एज अ फीमेल फॉर द लास्ट 3 years. आई हैव ट्रैवल्ड बाय माई सेल्फ. मेरा आज तक लिटरली एक भी चीज चोरी नहीं हुआ है, मेरे साथ कोई भी ऐसा बुरा इंसिडेंट नहीं हुआ है बहुत. Yeah, exactly. And like that's pretty interesting to know. But since you mentioned the word female, मेरे दिमाग में एक सवाल और आया है कि you are a female traveling alone. Like most of your trips must be solo. And there are few women like from India. अभी भी ये notion है उनके मन में कि solo traveling is not that safe. तो आपके साथ not just in France or Europe, कोई ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ है, कभी भी आप कहीं ट्रैवल किया हो कि आपको अपने करियर पे 2 बार लगाओ कि यार ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? So, talking about this, one of my first ever solo traveling trips, मतलब specifically बिल्कुल अकेले वाला, was from France to Barcelona. जब मैं बिल्कुल अकेली गई थी बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ने डिच कर दिया था मुझे. I feel sad But for I you. was like कि नहीं, मतलब I've booked my tickets, so I should go. Why should I always depend on someone? True. So I went. And while I was walking to my hostel by myself, ऐसे गर्मी है, तो I was like यार ये क्यों ही कर रही हूँ मैं, you know. But then over time, ऐसे 2-3 दिन में, when I was like, you know what, I can go anywhere by myself. I don't have to depend on anyone. I can go to any restaurant that I like. I don't have to consider कि कौन किसको क्या खाना है, किसको कहाँ जाना है. I was like, ये तो बहुत ही liberating है. You know, you can just do whatever you want. Of course, you have to, for example, not to be like very key tips hain, but like one thing that you should always do as a solo traveler in your early 20s, let's say, it's a very good idea to always stay in good hostels and always check the ratings on hostels, or maybe like look for other creators or look for other people who've been in those hostels and recommend it. So that's your initial research as a female solo traveler is very important. कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे, maybe there's some dangerous area, for example, you know. There's always these specific areas and places which are more dangerous than the others, etc. So it's very important कि आप अपना initial research बहुत अच्छे से करो, कि आपको पता हो कि okay, this place is very safe for women. If you're not comfortable, you should stay in like female specific dorms, for example. तो क्या होता है, उससे आपको solo भी feel नहीं होता. एंड हॉस्टल्स में बहुत वाइब्रेंट लाइफ होती है यूजुअली, तो आप दूसरे लोगों से मिल सकते हो. एग्जैक्टली. तो आप, एंड देन हॉस्टल पीपल ऑल्सो नो हाउ टू लाइक सॉर्ट ऑफ हेल्प यू आउट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम. यू शुड ऑलवेज नो कि क्या कोड्स हैं उस कंट्री में. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स द कोड टू कॉल फॉर एमरजेंसीज, फॉर एम्बुलेंसेज, फॉर पुलिस, एटसेट्रा. You should just know these things. That's a very good point. Exactly. It's very common, like to do your basic research, and then you should also like try to maybe go for like walking tours to make friends, to actually, you know, and then maybe go for like female supported businesses, etc., and try to like book tours which are female specific, because nowadays there's more and more tours which are very female specific. So it's interesting to do these things.
But to not do things because of the fear of not, fear of sort of security, I don't think it's correct. Often India में क्या होता है कि parents allow नहीं करते हैं, शादी के बाद. That's a very शादी के बाद. I've heard that a lot, like not just from my parents but in general also कि okay ठीक है तुम्हें जाना है, हाँ. पति के साथ चली जाना जब जाना. So मतलब वो तो मुझे बिल्कुल, मतलब मेरे पेरेंट्स ने लकली कभी ऐसा नहीं कहा. सो बट हाँ, पेरेंट्स के दिमाग में होता है, वरी होता है. इट्स नॉट जस्ट कि तुम्हें रिस्ट्रिक्ट करना है उनको, बट देयर इज ऑलवेज दिस वरी इन द हेड्स ऑफ योर पेरेंट्स. दे वांट द बेस्ट फॉर यू यूजुअली. And I guess at some point, like, that's fair enough. They are your parents. They have to care about you. But it's not like you need to be rebellious for that. You need to convince them with your proper research and details and everything. हाँ, मतलब you can convince most parents, but सबका of course there's levels of parents also. Some parents are extremely restrictive. तो उनका I don't have suggestions because I have not had that with my parents. But one thing is like, you should still try to convince instead of हम बहुत easily give up कर देते हैं, अगर कुछ चाहिए आपको तो you can't give up on it easily. You have to, try to find ways. And unless and until तुम्हारा last resort भी work नहीं कर रहा है, then you can't do much. But then, so I think it's very important कि तुम अपने parents को अपना location भेज दो. उनको ऐसा लगे, या तो ऐसा कोई कॉन्टैक्ट भेज दो जो तुम्हारे साथ जा रहा है या तुम किसी को जानते हो. मतलब फॉर एग्जाम्पल वन थिंग यू कैन डू इज हॉस्टल के रिसेप्शन का कॉन्टैक्ट भेज दो पेरेंट्स को. इफ दे कांट रीच यू, एटलीस्ट दे कैन रीच द प्लेस वेयर यू आर स्टेइंग. एटलीस्ट हैव देम इन कॉन्फिडेंस. उनके पास एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अपार्ट फ्रॉम यू एक रहेगा, तो दे विल आल्सो फील सेफ कि हाँ एटलीस्ट आई नो पीपल ओवर देयर. इवन इफ समथिंग हैपेंस टू हर, I can call somebody, I can text somebody. Yeah, give them the contacts to like the emergency services. और उनको webcam का आइडिया दिखाओ. Tell them कि ये मेरी itinerary ऐसी है. Maybe it's possible, like nowadays every city has webcams, like live webcams. So you can give them कि आप ये देख सकते हो. Maybe you might see me or something like that. Just like very random stuff. But you sort of have to assure them कि हाँ, and tell them you're capable enough. Don't expect your parents to send you to US directly by yourself. एक बार में, Instead, try to maybe, let's say कानपुर है तो आप बोलो मैं लखनऊ जा रही हूँ खुद एक्सप्लोर करने. Start small. Start next door. So I think हमारा ना क्या होता है, go big और go home वाला जो ये प्रॉब्लम है. मुझे लगता है कि अगर एंड हम बोल दें कि बहुत एक्सपेंसिव है ट्रैवलिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप थाईलैंड में जाके अपना फुल ऑन या मालदीव्स में जाके आप पूल विला में ही रुको. हाँ, एग्जैक्टली, दैट डिपेंड्स ऑन यू. एग्जैक्टली. ट्रैवलिंग, आपको अगर ट्रैवलिंग करनी है तो आप कानपुर में जाके मे बी यू कैन ऑल्सो गो टू, मतलब गंगा बैराज चले जाओ, कभी नहीं गए हो तो दैट्स ट्रैवल, दैट्स यू आर सीइंग अ न्यू प्लेस. मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है गंगा बैराज जाके. इट्स इवन इफ इट्स हॉट, इट्स लाइक हाँ. तो मतलब कुछ भी ऐसी छोटी छोटी चीजें, ट्राई स्मॉल स्टेप्स, तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी लगे कि यार हाँ इसकी इच्छा है, शी रियली वांट्स टू डू दिस थिंग. सो मे बी नेक्स्ट टाइम तुम्हें वो ऋषिकेश जाने के अलाउ करना है. So you also have to think कि मैं first time France नहीं चली गई थी ना, मतलब I went to Jaipur, then I went to Rishikesh by myself. Then we recently, like last year, we went to Goa with my parents. Imagine, मतलब Goa with parents sounds very strange ना, but my parents were so surprised कि इसको इतना कुछ पता है. I was the first time कि मैंने trip plan किया. Normally it's always make my trip. Proud of you, like we don't have to do anything. They keep on telling everyone कि यार इसने ऐसी जगह लेके गई, ये Fontanias लेके गई, वहाँ पे क्या colorful houses थे, हमने तो कभी नहीं देखा. My dad's been to Goa at least 5-6 times before, but he was like ये तो बहुत beautiful जगह है, तो क्या experience है, it's real local experience. So you have to show your parents also कि हाँ तुम्हारी actually बहुत इच्छा है करने की. So they will get convinced at some point of time. They're your parents, they're not like jail का wardens, Yeah, I can like definitely relate to that, क्योंकि मुझे याद है जब मुझे first time, मतलब I was traveling international and उसके पहले I didn't board any domestic flight and it was like मैं सीधा कतर ही जा रही हूँ. And my mom was at first like, are you mad or what? Then I gave time. I was like, I have 15 days to convince her. And I told her all the itinerary. Like, this is this. मैं यहाँ रहूँगी, ये होगा, फलाना, ये होगा. But like, उनके दिमाग में फिर भी हल्का था कि okay, that's a different country. Plus, that's Middle East. I don't know if you are safe or not. I'm like, you just trust me once. And I'll stay in touch with you. Every day I used to do video call and every day texting. I used to tell her, okay, now I'm at home. Now I'm at hotel. Now I'm outside doing this and this. And by the time I came back, उनका परसेप्शन मेरे लिए बहुत बदल चुका था कि नाउ शी नोज थिंग्स. एंड नाउ अब ये हो चुका है, व्हेनेवर वी आर ट्रैवलिंग लोकली, शी इज लाइक, प्लान अ ट्रिप, you plan the itinerary, you do everything, I'll just follow you. I'm like, okay, that's great. So that's very true. I can definitely relate and agree to that. But अच्छा, are you a person जिसको unexplored places explore करना ज़्यादा पसंद है या famous places?
आई एम अ मिक्स ऑफ बोथ. Okay. मुझे ऐसे ब्लॉक्स में रहना पसंद नहीं है, बिकॉज फेमस प्लेसेस आर फेमस फॉर अ रीजन. तो मतलब अगर आई एम ऑल्सो लेट्स से इफ यू गो टू पेरिस, मैं रात में 10 बजे जब आईफल टावर स्पार्कल करता है ना, मैंने उसको 50 बार देख लिया, बट आई एम स्टिल लाइक ऑस्ट्रक. इट्स नथिंग, इट्स अ टावर with sparkles, you know, but it's the history behind it, you know, how it was not even supposed to be there. मतलब उसको तो 20 वो it was never a permanent thing. Eiffel Tower was supposed to be dismantled after 20 years. Okay, I didn't know about that. Yeah, it was supposed to be dismantled after 20 years. It was only there for like a universal exhibition. And but then the maker Gustave Eiffel, like he went to such efforts to show that इस टावर का एक्चुअली यूज है. प्लीज इसको रहने दो, हमने इतना मेहनत करी है इस पे, वी स्पेंड सो मच टाइम ऑन दिस, प्लीज लेट इट स्टे. एंड नाउ इट्स द आइकॉन ऑफ द सिटी. लाइक you know, Paris without Eiffel Tower, you can't imagine right now. So that is like, you know, when you get to know the history behind these things. And then, but I would also like to go to just like wander around Montmartre and doing nothing and just like walk by the Seine, or just do nothing, or, you know, maybe explore like a very stupid, random, funny museum in the quarter, you know. So what has been your, like, which has been your favorite city in France? Paris is definitely one of my favorite cities, because there's so much to do. Like, you can't run out of things to do. But otherwise, there is this city called Le Puy-en-Velay, which a lot of French people also don't know about. It's a very small town, and it's not very famous. But in September, last year, I was invited by a friend I made in France, local friend, to come to his town and stay with his family and experience this local festival. So it's a local Renaissance festival which happens in September. Mm-hmm. And I've never experienced anything like that. By the evening, the entire city transforms into like Renaissance era ka pura. And you dress up, and even old people dressing up, and there's kids, and, you know, everybody's dressed up in these huge outfits, and there's sort of like exhibitions of, you know, printing and like dancing and folk dance, and it's incredible. I've never seen anything like that, and I wouldn't have seen that if I hadn't made a local friend, you know. So it's the connections. That's what I'm saying. Like, अगर तुम बात ही नहीं करोगे लोगों से, तो ये एक्सपीरियंस तो पॉसिबल ही नहीं था ना. तुम पेरिस घूम के आ जाते, तो मैक्स नीस और कैन चले जाते. बट ये एक्सपीरियंस तो मुझे नहीं होता अगर मैंने बात नहीं करी होती लोगों से. If I hadn't put myself out there to be like, yeah, okay, I want to talk to people and I want to know what they do. I want to know their stories. So this place is very close to my heart. And I've gone to Germany by walk to get groceries one time, just for fun. You can literally walk to Germany. It's on the German border. So you can literally take the bridge and you can just walk to Germany, because I was like, Germany mein groceries saste hain. That sounds so crazy. I went to Germany to buy groceries. Yeah, I know. It's incredible, you know. And it's such a beautiful city. And that region where I am, that is the region for the inspiration of Beauty and the Beast, by the way. So it's literally the town from Beauty and the Beast is actually based on that region. It's that beautiful. That's really amazing to know. So since you just mentioned like of different languages, like since India has 22 languages and you learn French, आपके हिसाब से additional language learn करना, why is it important? या किसी को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तुम्हारी इच्छा है, तुम करो. सिर्फ you need to have a motive. You need to have a very inner, very personal reason to learn a new language, because languages is not like history, geography. तुम रट्टा मार के नहीं सीख सकते language सीखने के लिए तुम्हें ढीठ होना पड़ता है. You have to put yourself in a situation where you might be made fun of, you might be wrong, because language तभी आती है जब आप बिल्कुल घुस जाते हो उस language में. And you need to interact a lot. You need to interact, yes. You need to literally, that's what I'm saying. You need to put yourself out there. क्योंकि आप बहुत गलत बोलोगे starting में. There's no way कि आप language में starting में सब कुछ perfect बोलो. अभी भी I keep on making mistakes. But that's okay. If the other person can understand what you're saying, that's fine. Let them correct you. Don't be embarrassed. So languages, it's very, I think in today's world, if you want to travel or if you just want to be somebody, learning a new language is a very good skill. So अगर आपकी इच्छा है language learn करने की, वो कोई भी language हो. I don't think कि मतलब ऐसे कोई एक important language है. Obviously, English as a language is a very good language to know because it's extremely international. But जैसे मैंने French सीखी, तो French is spoken on 5 continents.
Okay, which means that I can now interact with the people of 5 different continents. I can interact with millions of more people without having to sort of hide, like lose things in translation. क्योंकि आप कितना भी कर लो ट्रांसलेट, इट्स नॉट द सेम. जो छोटी छोटी इंट्रिकेसीज होती है ना एक लैंग्वेज की, या फॉर एग्जाम्पल मतलब मुझे ना अभी क्या एक्साइटमेंट होता है, मैंने फ्रेंच सीख ली. जो मैंने 3 साल पहले एक मूवी देखी थी फ्रेंच में, क्योंकि स्कूल कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट था. तो वो मुझे मूवी ना, उसकी आधी मूवी तो समझ ही नहीं आई थी, कल्चरल रेफरेंसेस ही नहीं समझ में आए थे. अभी मैंने सेम मूवी से 4 महीने पहले देखी एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट दे मेंट, यू नो. सो नाउ व्हेन यू लिव इन दैट कंट्री, और व्हेन यू एक्चुअली इंटरेक्ट विद दैट लैंग्वेज सो मच, यूज दैट लैंग्वेज सो मच, it just changes your perspective. It helps you. Matlab, now I can watch movies, comedy shows, listen to music in 3 languages without having to be like, "Yari, kya matlab hai iska?" You know? You get a bit of like self-confidence also. Yeah. Like, I know an additional language as well. I get so excited ki, oh my god, I'm understanding this reference. Oh my god, I'm understanding this comedy show. I understand this joke without having somebody, like without somebody having to explain it to me. Yeah, exactly. Which is a beautiful feeling. Like even after I've been learning French for what, 8 years. मतलब लर्न, बट देन आई थिंक मैंने जो लास्ट 2 साल में सीखी है फ्रेंच, वो मैंने 8 साल में भी नहीं सीखी. Maybe because you have like interacted with a lot of people with that language. Exactly. So मतलब मुझे लगता है कि मैंने जो 3 साल में कॉलेज में फ्रेंच सीखी, मुझे लिखना आता था, but I couldn't communicate. I didn't know how to express myself in that language. And आज I can go from Hindi to English to French without thinking. I don't have to translate in my mind because I let myself be in that, you know, space. And I used to think कि जो भी लोग फ्रांस जाते हैं 2 साल में तो सबको आती है fluently language, but that's apparently not true because you have to really put yourself out there. Yeah, that's true. And like there's always a debate अच्छा इंग्लिश को लेकर के, स्पेशली इंडिया में, एंड अभी हाल फिलहाल में तो और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि इंग्लिश आनी इम्पॉर्टेंट है या नहीं है. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यार इम्पोर्टेंस तो सब्जेक्टिव होती है ना, तो अब क्या करना चाहते हो आपका उस पर डिपेंड करता है. But in general life, do you think like English, people should know English? Like according to my opinion, मुझे ऐसा लगता है English is a language जो universally use होती है. Even if you are traveling to another country, जहाँ पे German, French कुछ भी बोली जाती हो, maybe they don't know Hindi, maybe once they even can't understand French, but they'll know English. आप उनसे basic चीजें बात कर सकते हो. I mean, of course, if you want to go out of the country, you want to be put in like a relatively international context. If you want to skill up, in general, you know, English is definitely a very good language to know as a second language, or because fluency in English, or even if you know the basics of English, it helps a lot, especially if you're into traveling. क्योंकि हिंदी नहीं आती लोगों को. Hindi is one of the most spoken languages in the world because of India's population. Yeah, true. But it's not because of how international Hindi is a language. It's a beautiful language. I wish I am more connected to it. मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं और better हिंदी बोलूँ, क्योंकि अभी इतना disconnect हो गया ना हिंदी के साथ कि बात ही नहीं होती हिंदी में. So, but I want to connect with Hindi. मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं और हिंदी लिखूँ या और हिंदी बोलूँ. But English definitely बहुत ज़्यादा international है comparatively. So it's good to know English. I think it's very important to know English in today's context. कि अगर आपको कुछ करना है ऐसा जिसमें आपका थोड़ा भी travel है, या फिर आपको किसी और से बात करनी है. For example, let's say if you connect between, even if we talk about India, North and South. Yeah, exactly. Southern languages are extremely difficult like different from the North Indian languages that we have. Like for example, if you know Hindi, you can usually understand Haryanvi, Bihari, etc. You can understand Rajasthani, Punjabi, even sometimes Bengali you can understand. Bits. But I don't know anything in Telugu or like Malayalam or Tamil. Which is like difficult ना, मतलब तुम अपनी country के लोगों से ढंग से बात नहीं कर पा रहे हो. मतलब I've noticed कि there's more South Indians who know Hindi than North Indians who know Southern languages. So उस context में English is very important. Yeah, I guess English acts as a mediator between the two. It's the lingua franca, right? It's the basic language that sort of connects the country in a way. Which is strange, you know, if you think about historical context and everything. So, I think knowing English today is extremely important. That's very true. And I remember जब मैं कतर में थी तो मुझे 1 हफ्ता हुआ था वहाँ पहुँचे हुए. And I was like कि एक काम करते हैं, यहाँ का इंट्रोडक्शन याद कर लेते हैं. And मैंने फॉर्मल इंट्रोडक्शन याद किया, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन याद किया, थैंक्स एवरीथिंग. I even मतलब मैंने मेट्रो की अनाउंसमेंट्स तक याद करके खुद रख ली थी ऐसी फन में. And then one of my friends told me कि क्या कर रही हो? I'm like, I'm just learning Arabic. मतलब जरा बताना. मैंने 3-4 लाइन का इंट्रोडक्शन दिया. He was like,
ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, एक शब्द कहते हैं उसमें काम हो जाएगा. सो बट उसके बाद से मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आने लगी व्हेन यू इंटरेक्ट विद दोज पीपल एंड पीपल ओवर देयर वर वेरी स्वीट बिकॉज यू न्यू द लैंग्वेज. आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, सेम लेवल पे कॉन्वर्जेशन होती है. सो या दैट्स ट्रू, लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. But since we are talking about language and you are a skilled person in language, so अगर किसी को आपकी फील्ड में आना है या फिर इस चीज में आगे अपना करियर बनाना है, what skills do you think उस इंसान के अंदर होनी चाहिए? Definitely stubbornness. You are a very stubborn I'm person, very right? stubborn. Stubbornness in a positive way, of course. You know, there's a different, like एक ढीठ होना होता है और एक stubborn की नहीं, ये तो करके करना है. हाँ. तो you need to be stubborn about it because language सीखना in a way it's very easy, but in another way it's extremely difficult क्योंकि motivation चाहिए होता है language सीखने के लिए. तो that is one thing definitely. और आपको मतलब basic, आपको एक language पे command बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपको वो language use करना है to learn the other language. So वो definitely is one skill that you need to have कि आपकी एक language पे command काफ़ी अच्छा है. And then of course you have to know what to study and where to study. क्योंकि language में आप ये नहीं है कि आप मतलब apple सीख लिया, banana सीख लिया. क्योंकि हम English तो बचपन से सीखते हैं almost. तो हमें पता नहीं कि English सीखें कैसे, you know, just हो रहा है बस. हिंदी घर पे बोलते बोलते सीख जाते हैं. And then in the beginning you need to have the motivation कि मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है. बट अगर मैं सुनती रहूंगी, ये गाना सुनती रहूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा. Yeah, I guess you need to also have that patience. Yeah, patience, definitely patience. So I think patience, a little self-motivation and stubbornness to do that thing. And to also be okay with making mistakes. क्योंकि हम ना in general ऐसे human race ना ऐसे हमें भागने की जल्दी होती है. हम चाहते हैं कि हम सब 5 मिनट में सीख जाएं. You know, that's why all these videos on Instagram and YouTube की okay, learn this skill in 1 month, learn this skill in like 10 days, works really well. But ऐसा नहीं होता ना, मतलब आप बेसिक्स सीख सकते हो किसी चीज का बट आप प्रॉपर्ली उस लैंग्वेज की सैटेलिटीज नहीं सीख सकते. या वो एक ऑल्सो आई गेस वो एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपके साथ रहेगी बट वो एक परमानेंट इम्प्रिंट नहीं हो जाएगा आपके अंदर. एग्जैक्टली. तो आपको बेसिकली यू नीड टू बी ओके विद मेकिंग मिस्टेक्स. आप अपने आप को बेसिकली ना आई थिंक इन जनरल कुछ भी सीखने के लिए अपना मजाक बनाना सीखना चाहिए. क्योंकि किसी को भी ऐसे फर्स्ट टाइम में nobody became a big thing. It's always over the years and practice and practice and practice. Practice doesn't make perfect, it makes better. And that is glad to hear that actually. Yeah. So it's that is the basic mentality that you need to add. कोई बात नहीं, मजाक उड़ेगा, 5 दिन मजाक उड़ेगा, 6वें दिन में भी they'll be like हाँ ये तो अब ठीक है, कोई बात नहीं. गलती लोग करते हैं, इंसान ही गलती करता है. Very true. And since we are talking about mistakes, what has been the worst mistake that you have made while traveling? यार वो तो बहुत सारी हैं, but let me since we're talking about language, in French there are 2 words which are very similar. One is called poisson, one is called poisson. Poisson means fish. Okay. And poisson means poison. Okay. So we were in a restaurant. I don't eat fish, I'm vegetarian, but a friend of mine, I was like हाँ मुझे French आती है, so I'll order. So हमने poisson की जगह poisson order कर दिया and the staff was like okay, you asked me for some poison here? They understood, but it was a very funny mistake in terms of language. So these like tiny, like एक letter का difference है दोनों words में, but it changes the entire context. And then another mistake we made was not we were booking a hotel with like 2 of my friends, and then हमने सबसे stupid काम करा, हमने ना अगले महीने का होटल बुक कर दिया. क्योंकि वो opposite dates होती हैं. So हमारे दिमाग में it's day, month, year. Yeah. So on the website that we were booking, it was month, day and year. Yeah. So हमने opposite book कर दिया and it was non-refundable because पैसे बचाने थे. You know, so you want to save those like 5 rupees also every time you travel by booking non-refundable because हमारे like हम कल ही तो जा रहे हैं तो हम बुक कर देते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा, अब थोड़ा कैंसिल होगा ट्रिप. सो that thing. So I think अगर आपका बहुत आप unless and until आप completely sure नहीं हो कि आप सही, always check while reserving things to save money. It's very important कि हमेशा आप ऐसे reservation करो, and also to keep like a extra like sort of backup money. Backup money is very important. Yeah, I guess like लोग सिर्फ एक जगह like if they are taking their wallet, they're like सब भर दो इसी के अंदर, सारी करेंसी इसी में रहेंगी, but that shouldn't be the case. Backup money in general की कोई mistake हो जाए, क्योंकि traveling is such a it's a non-controlled experiment of sorts कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते. तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है कभी ना कभी, क्योंकि हम जैसे मेरा जो सिम है फोन सिम, उसमें ना क्या है कि उसमें शेंगन एरिया इंक्लूड, लाइक उसमें आई थिंक यूरोपियन यूनियन इंक्लूडेड है,
एंड उसमें स्विट्जरलैंड इंक्लूडेड नहीं था. तो हम ना स्विट्जरलैंड गए, हमने रियलाइज नहीं करा और हमने इंटरनेट यूज कर लिया वहां पे 5 मिनट. I had to pay 50 euros extra, which is like 5,000 almost rupees for not even like 25 MB of internet. And that was a stupid thing क्योंकि हमने check नहीं करा कि Switzerland included है या नहीं है. So I think these little things where you can sort of like save money and just like not be like me. So would you recommend people like traveling to another country to get a SIM card? And what else travel hacks do you prefer while traveling? Travel hacks, I mean, depends. सबसे पहले तो I think one travel hack that a lot of people don't use is getting city cards. City cards are like basically, you know, you get a lot of if you're somebody who wants to go to a lot of places and visit. It doesn't work for people who just want to like go to one place or two places. But city cards in general, every city has their own cards, tourism cards. And that usually includes transport. Yeah. It includes all the attractions. That are main very attractions. helpful. Yeah. So you only get one card and then you can just like go to any place instead of standing in lines for every attraction. That saves you a lot of money. And then apart from that, you know, sort of always check कि सबको लगता है दिमाग में कि हॉस्टल्स हमेशा होटल से चीप होते हैं, एयरबीएनबी हमेशा होटल से चीप होते हैं. दैट्स नॉट ट्रू. इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. सो ऑलवेज चेक तीनों जगह कि क्या आपका रिक्वायरमेंट है. इफ यू आर ट्रैवलिंग सोलो, आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर टू गो टू हॉस्टल्स. इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ बिग ग्रुप, इट्स यूजुअली बेटर टू टेक एयरबीएनबीज बिकॉज यू नो यू गेट योर ओन स्पेस, यू कैन कुक. आई लव टू लाइक cook in the sense that if you want to save money, food पे बहुत money बचता है. तो and I'm not saying a lot of people criticize me, तुम country जा रहे हो, तुम खाना नहीं खाओगे तो क्या point है. That doesn't mean when you're going to a supermarket in a country is one of the best travel experiences That's very ever. true. Like I love shopping. Yeah. मतलब तुम वहाँ पे इंडिया में तुम सुपरमार्केट जाओगे, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सुपरमार्केट्स इन फ्रांस. वहाँ पे चीज जाके इट्स क्रेजी. You get to see so many things. You get to see such exotic fruits, and there's a whole table of just cheese and everything. So that's very interesting. You know, that is also part of the experience. तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें, some people like यार सुपरमार्केट जा रहे हैं, but it's an experience in itself. It's actually seeing what the local people experience every day. You know, see what they are buying. I love doing like these little like timings and just like seeing कि लोग क्या खरीद रहे हैं. So that's very interesting. And then what you can do is you can balance out. People need to know that traveling is it's not an easy task. It's a job. You know, when you're traveling, unless and until, of course, you have a booked package, which is, of course, normal. अगर तुम्हारा 9 to 5 job है, तुमको सिर्फ, you don't want to plan your itinerary, okay? Which is fine. If you're taking like a package, that's great. You're still experiencing something. So that's a different case altogether. But if you're planning your own trip, I think it's very important कि तुम balance out करो. Decide कि ये तुम्हारा budget है. पहले ही decide करो. सबसे पहले decide करना चाहिए कि तुम्हारा budget क्या है. And for me, मेरा ऐसा नहीं है कि नहीं, ग्रीस ही जाना है. I have vacations. I am not gonna check कि मेरे को ग्रीस ही जाना है. I'm like, okay, what if the tickets to Romania are cheaper? It's a new country. It's a new experience. So I think it's very important to be flexible. आप Google Flights पे जाओ. Put anywhere. Put your country where you're leaving from. Put your airport where you're leaving from. Put your budget. कि तुम्हें 10,000 में रिटर्न फ्लाइट चाहिए, कहाँ की मिलेगी. तो मतलब आई थिंक दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट हैक्स एंड दैट्स व्हाई आई हैव गॉटन टू ट्रैवल सो मच बिकॉज आई एम लाइक रैंडमली गूगल फ्लाइट्स पे जाके ये मेरा लीविंग लाइक डिपार्चर एयरपोर्ट है और यूरोप में कहीं भी मुझे आप बता दो कौन सी सबसे सस्ती फ्लाइट्स है. लाइक दैट्स वेयर वन ऑफ माई बिगेस्ट एडवेंचर्स हैपेंड व्हेन आई वेंट टू कोपेनहेगन. So I literally I was going to work, I was a little sad or something. And my coping mechanism is like just booking flights. So I went on Google Flights, I put कि ये departure airport है, and I put Europe, and then I put कि 100 euros में return flight चाहिए. And then the first result was Copenhagen in Denmark. And at that point of time, I was also reading this book called The Little Book of Huga. And उसमें ना एक picture था उनका एक harbor का. And I was like, yeah, let's do it. Within 5 minutes, I had no plans of actually going to Copenhagen, but I booked my tickets for 2 weeks later for the weekend. And I went to Copenhagen. It was an incredible experience. It's like you didn't even know and you manifested it already. So I think flexibility, if you really want to explore, of course, कि तुम्हारा bucket list ग्रीस जाना है, तो तुम figure out करो कि तुम्हें एक चीज में flexible होना पड़ेगा. या तो तुम्हें अपनी dates में flexible होना पड़ेगा, या तो तुम्हें अपनी destination में flexible होना पड़ेगा. Yeah, so definitely. That's one of my biggest like hacks to actually, if you want to travel, तुम्हें एक flexibility तो रखनी पड़ेगी, या तो तुम्हारे पास बहुत पैसे हो.
That's actually really interesting. Like मुझे ये hack काफी interesting लगा and I'm sure I'm gonna apply the same. But अच्छा अभी right now I can see a lot of collaborations happening on your Instagram account. So I wanna know, how do you reach them or how does that process works? So when you see a collaboration on Instagram, that means I've had at least 20 rejected collaborations before that one collaboration that got approved. So I've been working with different travel companies, whether it's like tour guides ka companies, or it depends, like tumhara kya, where do you want to like go and what do you want to try. So one thing is, of course, you have to be able to reach out to people. Rejections, we are so afraid of rejections na ki hum try nahi karte. So I'm just to tell you, like at least for having one of my Prague collaborations, I messaged at least 20 different places. And then 21st jo tha, unka response positive aa gaya, So it is also about कि तुम्हारा, it's a numbers game. इसमें quantity चलता है. It's a lot like cold emails. So इसमें काफी quantity चलता है कि कभी क्या होता है कि कभी किसी होटल का they're not interested in collaborations, or they're not interested, like in that period they're not interested because बहुत high season है. तो collaborations का तो ये है कि आपको email भेजना पड़ेगा ना, you have to show them quality also. तुम्हें दिखाना है कि तुम ये कर सकते हो. So I would always like, the best thing is you tell them, okay, this is who I am, this is what I do, this is what I can do for you. And then you send them some samples, some examples if you've already done it. Otherwise, let's say if you want to start as like getting collaborations and you don't already have a collaboration, तो क्या करना चाहिए कि आप अपने local hotel में जाओ, create a portfolio, create some images, create what you can do, and then उसको use करके you show them, okay, this is my skill और मुझे ये करना है. But अगर आपके पास skill ही नहीं है और अगर आपके पास इच्छा ही नहीं है, just Instagram पे सब कुछ अच्छा लगता है. You're like, oh, this is Prageet, she's constantly traveling. I keep on getting these messages, but nobody sees the reality. Like of course, I can put myself out there more, but मतलब even when you put out, it's not the same. क्योंकि एक क्या होता है कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे 10 दिन है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 10 दिन तुम्हारे 9 दिन ऐसे ही हैं. you're working, you're tiring, it's tiring, you're coming back home, you've not even eaten food properly because I'm like, क्या कुक करूँ मैं अब अकेले अपने लिए, it's difficult to be by yourself in a country like so far away. But then वो 2 दिन जो होते हैं, oh yes, I'm going to Copenhagen, must पूरा 2 दिन, it's having and people fun. often see just those 2 days, not the other 10 days. Exactly. सबको लगता है कि मैं बहुत rich हूँ. Which I'm like, if you want to think so. But I realized that my parents are amazing. They wouldn't say no to me if I want to take money from them or something. But मैंने हमेशा से सोचा था, even when I was in college, कि मैं travel के लिए पैसे नहीं लूंगी अपने parents से, क्योंकि वो मेरी इच्छा है. Your food, your schooling, and etc. Your parents are expected to pay that in a way. But I was like, traveling is something I want to do on top of this. So I did internships. I would save up money. Sometimes I might not go out to eat a lot, or whatever. Just these small things. You have to prioritize कि तुम्हें क्या करना है. So these small things, that's why I've saved up money. It's not like I'm super rich or I'm earning like I'm a billionaire just having an amazing job. A lot of the hotels that you see on my Instagram are collaborations because I provide them with UGC content or just in general content, just give them exposure in a way, or they like who I am as a person. So it helps, you have to have that also. You need to be out there in general. You need to put yourself out there. Okay, this is what I do. They know that I'm comfortable in front of the camera, so I can actually take people around and do room tours, for example. Yeah, I guess that barter systems help a lot because you need to give them something to gain something from them, of course. So the idea is that उनको भी लगना चाहिए ना कि तुमसे कुछ मिलेगा उनको. सबको लगता है कि हाँ बस hotel collaboration मस्त जाके रुक गए and काम खत्म. But you have to give them something. That's very true. You have to create content because content creation it's fun. I love doing it, but it's also tiring. Yeah, I want to come home. I'm coming to my hotel. I just want to chill. I want to go out, explore. But no, I have a limit now. I have to create content kind of thing. Yeah. So it's of course that. If you're okay with that, go ahead, do it. And it's amazing. It's you meet a lot of new people. You even like in the travel industry, you create contacts and things like that. That's true. But you have to put yourself out there. It has both the sides. And you can't just be like, okay, I'm seeing that side and I can ignore the other one. You have to be in that place for sure. So basically idea ये है कि एक तो flexible रहो. If you have to like sort of just conclude everything. It's like when you're traveling, you have to be flexible. With your dates,
with your budget or with your destination. एक तीनों में से एक चीज तो आपको flexible रखनी ही पड़ेगी. Then 2, you have to send out a lot of emails and you have to see कि वो first email कभी land नहीं होती. हमेशा वो मतलब बीच में randomly, and you have to follow up. कोलैबोरेशंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉलोइंग अप. हाँ, दैट्स ट्रू. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें लगता है कि उनके पास और कोई काम नहीं है और हमें रिजेक्ट कर दिया जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड इन द फर्स्ट ईमेल. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो अप बिकॉज उनके पास भी बहुत काम है ना. Yeah, they have so many people coming over there. You are just reaching out to them, but there are so many people reaching out to them. Exactly. So वो फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट. उनको भी लगना चाहिए कि तुम्हारी इच्छा है एक्चुअली to do this thing. So it's a lot of work, but it's also very interesting because I have gotten to travel to different countries and afford it because of a lot of these collaborations. I've had a different luxury vacation which I would have not had if it wasn't for these collaborations. That's pretty interesting to know. But before ending this podcast, I have a quick rapid fire round for you. Oh God. Don't take the tension. I'll be gentle on our questions. So the first one is, whatever you are doing right now, if not that, what else would Prageet be known for? I think fashion designing. That's what I always wanted to do. Oh. So Yeah. are you a Niftian also? I got into NIFT. I never went. Okay. Yeah. Fair enough. One thing that you miss the most about Kanpur in France and vice versa. In Kanpur, when I'm in Kanpur, I miss just, going out for walks and taking my bike and just like wandering around because it's all cute, Yeah. And when I am in France, I definitely miss the food the most. The food and of course the connections with my family and just like, chilling and, not having to think कि अब क्या करना है, खाना क्या बनाना है. हाँ, That is one that's thing a I'm very like, big खाना क्या question. बनाना है. Okay. So one life decision that you love the most and one that you hate the most. One life decision is just to go to France actually. Take that leap instead of being like new country kaise jaye. And one life decision I hate the most is I should have done my masters thoda jaldi. Okay. Yeah. Fair enough. One advice that you would give to all the women out there who want to travel the world. Go for it. एक itinerary बनाओ, Three convince magical करो words. और चले जाओ. Just एक first step ले लो, फिर होता रहता है चीजें. It's the first step that counts. Also, just because we think we want to travel doesn't mean we want to travel. हमें ना Instagram पे देख के लगता है कि ट्रैवलिंग करनी है, बड़ी इच्छा है, बट एक बार आप जब कर लेते हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पसंद आती है, which is normal. हर चीज हर इंसान को नहीं पसंद आती, तो एक बार करके देखो, कोशिश कर लो. फर्स्ट चीज चाहे लोकली कर लो, अकेले तुम कैफे ही अकेले चले जाओ. इफ नथिंग एल्स इज बीइंग अलाउड, कैफे अकेले जाके देखो, पसंद आ रहा है, then go for it. Yeah, at least don't have that FOMO while sitting at home. हाँ. Do that thing and करके then do देखो. it. कैफे अकेले जाना भी बहुत बड़ी स्किल है. Everybody can't go to a cafe alone and just Yeah. like order by themselves. And if you can't do that, I don't think you can travel Go to a solo. movie alone. Go हाँ. to have dinner alone. So start somewhere. Okay, so the next is this or that. You need to pick your preferences pretty quickly. French desserts or Kanpur ki kulfi? French desserts. Okay, cursing somebody in English, French or Hindi? हिंदी. फीलिंग हिंदी में आता है, इंग्लिश में तो कुछ फील ही नहीं आता. But tell us a curse word in French. Putain. I won't ask what it Sufficient. means. Okay. Spicy Indian cuisine or authentic French cuisine? Spicy Indian cuisine. Okay. Last but not the least, I have the question of the decade. How do you pronounce CROISSANT? Croissant. Croissant. Yeah. Okay. You can. It's not croissant. It's not croissant or anything like that. It's croissant. Okay. The next time you are at a cafe, please order croissant. So thank you so Yes. much, Prageet. It was wonderful talking to you. I hope you had fun too. I had so much fun. Thank you so much. Thank you so much. So that's it for today. If you like this podcast, then don't forget to hit a like and comment down below. Who do you want to see the next on our podcast? A special thanks to our venue partners, Sirocco, Castro Lounge and Bar, Hotel Vijay Intercontinental, Kanpur. So आज की स्टोरी तो यहीं तक थी, लेकिन ऐसी और भी स्टोरीज जानने के लिए you need to subscribe to the Kanpur Stories now. We'll meet you on the another episode. Till then, this is Ritika signing off.